नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट वाला। तो आज और एक स्टॉक लेके आए हूं आपके पास, हिंदुस्तान जिंक। ओके, सो हिंदुस्तान जिंक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, वाई आई एम डिस्कसिंग दिस, क्या इंपॉर्टेंस है। आप अगर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, तो विल डिस्कस इन आई टेल यू इन द लास्ट। ये एजेंडा क्वाइट अ लॉट, बने रही वीडियो में। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, देन आई विल डिस्कस द कंपनी डिटेल्स, देन इट इज़ द डिविडेंड्स, देन स्टॉक डिटेल्स, peer comparison, quarterly results, profit and loss statement, balance sheet, cash flow statement and then summary. पहले हिस्ट्री, हिंदुस्तान जिंक एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1966 and has a rich experience of more than 5 decades. 50 सालों का इनका एक्सपीरियंस है इन जिंक लेड माइनिंग एंड स्मेल्टिंग। ठीक है, उनका प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जिंक माइनिंग एंड स्मेल्टिंग में इनका रिच एक्सपीरियंस है फॉर मोर देन 50 ईयर्स। 50 ईयर्स काफ़ी होते हैं। ठीक है, एंड ये कंपनी सर्वाइव की है 50 ईयर्स। ठीक है, रैंक नंबर 1 इन मेटल्स एंड माइनिंग कैटेगरी in Asia Pacific in Dow Jones Sustainability Index 2019. ठीक है, it was number 1. Hindustan Zinc Limited is one of the lowest cost producers of zinc globally and India's only integrated producer of zinc, lead and silver. Not only zinc, in spite of इनका नाम हिंदुस्तान जिंक है, ये not only in zinc but now it also produces lead and silver. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ वेदांता लिमिटेड। ये बहुत बड़ी ग्रुप है विच ओज 64.9% ऑफ द स्टेक ऑफ हिंदुस्तान जिंक। रिमेनिंग 29.5% स्टेक इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 64.9 एंड 29.5 टोटल 94.4% ऑलरेडी प्रोमोटर्स के पास हैं। ठीक है, पब्लिक ओनली ओन्स 1.2 और 1.9%। ठीक है, इसके बीच में कुछ रेंज है। पब्लिक ओन्स दैट, some percentage is owned by FII, some percentage is owned by DII. Company details, it is a large cap company. Hindustan Zinc is a large cap company. Market cap 1,34,000 crores, बहुत बड़ी अमाउंट है, 1,34,000 crores. Number of dividends since 2001, 38 times कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर की है फ्रॉम 2001 टिल 2023. इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1960. इंडियाज लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट जिंक लेड माइनर। जिंक एंड लेड माइनिंग में सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, इंडिया के सबसे बड़े हैं। तो दिस प्रूव्स द worth of the company. What is the revenue mix? Revenue mix, zinc and lead 81%, silver 14%. उन लोग अपना जो बिजनेस है they're also going into wind energy and others, so that is 5%. So dividend when it was declared अभी फिलहाल में 2022, so it is considered as financial year 23. okay, सो अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है 15.5. अनाउंसमेंट डेट वाज 11th of November. एक्स डिविडेंड रेट वाज 23rd of November. इसका वाई दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है जिनके डीमैट अकाउंट में ये शेयर बिफोर 23rd of November में है, सो दे विल गेट the dividend of 15.5 per share.
सो 15.5 इज पर शेयर, ठीक है. एक शेयर अगर उनके पास है तो पर शेयर दे विल गेट अ डिविडेंड अमाउंट ऑफ 15.5. रिकॉर्ड डेट इज 24th of November. Record date matlab when it will be recorded in the exchange that these are the person who can get this dividend. Percentage 775 because 15.2 this is calculated based on 15.2 face value is 2, ठीक है. तो 2 into 100 अगर करेंगे तो it comes around 707, okay, 157.5%, ठीक है. So that's why it comes 775%. Don't go by the huge amount. अगर मान लो आप लोगों ने सोचा है that I will invest 10,000 rupees and then if I get 775% of this is 77500, 10,000 इन्वेस्ट करने में डिविडेंड which I'll get is 77,500. This is wrong. This is calculated based on the face value. This is the face value of the share. This is face value of share. Price is different. इनका price अभी जो है that is around 306. Latest price which I have seen is 306.35. So that is the price which is there. जब डिविडेंड डिक्लेयर होती है it went to almost around 324. Okay, and after that जब डिविडेंड हो गया देन इट केम बैक टू 306. जैसे मैंने बोला करंट प्राइस इज 306, ओके, दैट इज द लेटेस्ट प्राइस 306.35 और सम नंबर, ये आप चेक कर लीजिए. दिस इज द एग्जैक्ट नंबर, डेसिमल नंबर्स चेक इट. 306.35 इज द प्राइस ऑफ द शेयर. बुक वैल्यू इज 74. व्हाट डज दिस बुक वैल्यू मीन्स इज दैट अगर कंपनी ने अपना एसेट सारे सेल कर दिए देन ईच शेयर जो वन शेयर जो आपके पास है दैट विल वर्थ 74 रुपीज. दैट इज द बुक वैल्यू. पी इज 11.4. दिस द पी रेशियो वेरी लेस. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC इज 37.3. ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज 28.8%. प्रोमोटर होल्डिंग 64.9. But as I told you, it is 94.5. That was the promoter holding because government of India also has some holding. Actually, public के पास only 1.29 to 1.7 इतने percentage ही हैं. Other than that, everything is owned by government of India, promoters, that is Vedanta, FIIs and DIIs. Debt to equity ratio is 0.09, almost negligible. You can consider this. Dividend yield is 11.9%. That is very good. So this is the actual percentage which you get. Dividend yield, how you get. So if you see, dividend is given as 15.5. Okay. Another interim dividend was given as 18 rupees in 2023 financial year. Means in this year only, in the month of May till June, some date it has given a dividend of 18 rupees. So this comes around and 3. Okay, if you divide this by 305, you almost get around 11.9%. Okay, this is the yield which you get. Okay, if you invest 305 rupees per year, you will get a yield of 11.9%. That means 305 divided by 100 into 11.9, almost around 30 to 33 to 35. That is the amount which you will get. Okay. Face value is 2, and this is one more margin, EBITDA margin. This is very important. EBITDA margin is 55%. This is generally considered as the cash flow that the company generates based on all its operations. जितने भी operations है उसके basis पे the cash flow that the company generates is 55%. Peer comparison, if you see Hindustan Zinc MRP, which was when I had taken this, it was 324. That's what I told you. मैंने वही बताया था जब dividend declare हुआ था, it was 324.25. After that it came down.
इसके बाद ये अभी करंट प्राइस जो है इट इज़ 306.35. ओके. हिंदुस्तान कॉपर कंपटीटर है 112.25, बट यू कंसिडर दिस मार्केट कैप, इनका मार्केट कैप ऑलमोस्ट अराउंड 13 टाइम्स है. ओके, ऑलमोस्ट 13 टाइम्स इज बिगर हिंदुस्तान जिंक with respect to Hindustan Copper, okay, which is the second highest. Dividend yield 2022 financial year, which ended in March 31st 2022, it was 6.48%. It is almost around the same rate as the FD rate. If you fix deposit your money, जो yield आपको मिलेगा it is almost equal. ROC is 37.34, return on capital employed almost double than that of Hindustan Copper, or it is more than double of Hindustan Copper. Quarterly results, if you consider this, see the sales has increased from quarterly wise. If you consider this quarter, September quarter 2019, September quarter 2020, September quarter 2021, September quarter 2022. जब भी आप लोग कंपेयर कर रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, ऑलवेज कंपेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर. ठीक है. सितंबर 2019, सितंबर 2020, सितंबर 2021, सितंबर 2022. फ्रॉम सितंबर 2019 जो इंक्रीज हुआ है सेल्स, एक्सपेंसेस हैज आल्सो इंक्रीज ऑलमोस्ट फ्रॉम 2394 crore to 3928 crores. ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2 times हो गया है. ठीक है. सेम थिंग, द सेल्स हैज इंक्रीज 2 times, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज ऑल्सो इंक्रीज 2 times, 2117 crore. Here it is in September 2022, it is 4408 crore. Profit before tax is 2087. Here it is 3926, बहुत इंक्रीज हुआ है. नेट प्रॉफिट ऑल्सो इट हैज इंक्रीज. EPS अर्निंग पर शेयर इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 4.93 to 6.35. लास्ट ईयर it was around 7 or in the June quarter it was 7.32, so it has increased considerably. अगर सितंबर 2019 से देख रहे हैं EPS अर्निंग पर शेयर. प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर. ओके, मार्च 2011 में सेल्स था इनका 10,039 crore. अभी अगर हम लोग देखें मार्च 2022 में 29,440 crores. दिस इज ट्रेलिंग 12 months. लास्ट 12 months में इनका हुआ है 34,510 crore. Almost around 3 times it has increased. Operating profit has increased 3 times. Here also it has increased 3 times. Or close to 4 times. ठीक है. It has increased from 5,580 crore to 18,879 crore. Operating profit margin 56%, almost constant है. 55%. It is maintaining that 11 years or 12 years. It has maintained the same operating margin. Very good. Very good performance. It is one of the best performance for a company. Other income 872 to 1,233 crore in 12 years. Not much of an increase. डबल नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 0.5 में ही इंक्रीज हुआ है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 5,960 टू 16,815. दिस डजंट गिव एक्चुअल नंबर. ये एक्चुअल नंबर नहीं है, ये आपका ट्रेलिंग 12 months. इट मीन्स दिसंबर 2021 टू नवंबर 2022. नेट प्रॉफिट 11,404 crores. अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर हम लोग देखें अगर, इट हैज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज. मार्च 2011 में इट इज 11.60. अभी अगर देखें इट इज 26.99, 27. डिविडेंड पे आउट एवरी ईयर अगर हम लोग देखें, इट हैज पेड अ डिविडेंड 9%,
18%, 19%, 21%, 23%, 144%, 149%, 36%, 106%, 102%, 113%, 79%. This gives you, ये जो नीचे वाले फिगर्स है, दिस गिव्स द 10 years का रेट में क्या है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 10 years 7%, 5 years में 4%, 3 years में 8%. स्टॉक प्राइस CAGR 10 years में 9%, 5 years 1%, 3 years 15%, 1 year में it has decreased 3% increase. So very good stock to invest in it right now. Balance sheet. Balance sheet is मेरा इनकम कितना है एंड मेरा लायबिलिटीज कितना है, मेरे इनकम कितना है और मेरे खर्चे कितने हैं. दिस इज द बैलेंस शीट. व्हाट इज गिव्स द बैलेंस शीट. ओके, तो अभी अब अगर हम लोग देखें, द टोटल लायबिलिटीज इन मार्च 2011 was 25,053 crore. It has now 42,547 crore. One significant thing to notice over here, अगर हम लोग देखें इसमें, शेयर कैपिटल इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट 11 years में 845 crore. It has kept constant year on year. एक बहुत बढ़िया जो इंक्रीज हुआ है, इट हैज इंक्रीज द रिजर्व फ्रॉम 21,688 टू 30,000. मोर देन 30,000 crore इज द रिजर्व नाउ. रिजर्व मीन्स इनके पास कैपिटल कितने हैं, दिस इज द कैपिटल विच दे हैव, विच द कंपनी हैव इन देयर अकाउंट्स. 30,434 crore. मार्च 2019 में उन लोगों ने लोन, उनके पास लोन थी 2,538. दे हैव इंक्रीज्ड मार्जिनली 2,907 crore. सम अमाउंट ऑफ लोन इज देयर. अगर मार्च 2017 में देखें, दैट्स द फर्स्ट टाइम दे हैड टेकन अ लोन 7,908 crore उन्होंने लोन लिया था. अभी उनके पास 2,907 crore है, बट this is very less as compared to the reserve that they have. रिजर्व के कंपैरिजन में इनके पास बहुत कम लोन है. अदर लायबिलिटीज 8,361 crore. फिक्स्ड एसेट कितने हैं, बिकॉज दिस इज अ हेवी कैपिटल इंसेंटिव कंपनी. इनके पास फिक्स्ड एसेट इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्रीज, एवरीथिंग अगर आप कंसिडर करते हैं तो उनके पास वो भी इंक्रीज हुआ है. फ्रॉम मार्च 2011 इट वाज 7,000 crore. अभी उनके पास मोर देन 17,000 crore. तो ऑलमोस्ट 3 times उनके पास इंक्रीज हुआ है फिक्स्ड एसेट्स. कैपिटल CWIP इज द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कितने कैपिटल है उनके प्रोग्रेस में, दैट इज अराउंड 2,461 crore. अगर ये भी if this amount also comes into production, अगर ये अमाउंट जो इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ये अमाउंट भी अगर प्रोडक्शन में का हो गया, then it will be a huge amount. You can see a huge increase in the sales and in the profit. Investment कितना है, 9,335. Now it has almost around 13,603. Other assets is 9,116. Not much of a difference over here. तो ये देखिए जितने मेरे टोटल लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज दे हैव टू बैलेंस विद द टोटल एसेट्स एंड दैट्स व्हाई इट इज अ बैलेंस शीट. दिस शीट बैलेंसेस द लायबिलिटीज विद द एसेट. तो ये अमाउंट बैलेंस होता है विद दिस अमाउंट. ठीक है, ये अमाउंट एंड दिस अमाउंट इज बीइंग बैलेंस्ड. कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो एवरी ईयर एक्सेप्ट ऑन मार्च 2015, March 2019 and March 2021 because of pandemic. Now again they have entered into a positive cash flow. 1,279 crore is the positive cash flow. Cash from operating activity, they have almost increased 3 times. March 2011 में इनके पास 4,272 crore थी, अभी they have increased to 12,619, almost 3 times they have increased. शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखें, it has remained constant. Okay, quarter on quarter it has remained constant. 64.92% is the promoters, it is held by Vedanta. FIIs के पास 0.81%, DIS के पास 2.95%, गवर्नमेंट के पास
29.54%, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ओनली 1.75%. सो दिस इज वन थिंग, बहुत कम स्टॉक मार्केट में है एंड यू कैन कंसिडर बाइंग दिस. सो इन समरी, consider all this, buy Hindustan Zinc if you want to have a regular income. Why regular income? Because in 2023 they already have declared 18 rupees plus 15.5 rupees of dividend. अगर ये हम लोग डिवाइड करें, एवरेज प्राइस लेट्स कंसिडर 300, ठीक है, तो 333.5 डिवाइड बाय 300 into 100, it comes around 11.12, ठीक है, और 11.09% जो मैंने किया था वही हम लोग कर रहे हैं. दिस इज द शेयर प्राइस विच इज देयर. सो 11.12%. अगर हम लोग इफ यू इन्वेस्ट 15,000 और से इफ यू हैव 21,000 रुपीज, 21,000 रुपीज आपके पास है, तो यू कैन बाय अ शेयर ऑफ 70 शेयर्स आप लोग ले सकते हैं. तो इसमें 21,000 में बैंक में अगर इन्वेस्ट करते हैं देन यू विल गेट 6%, 1260 एज इंटरेस्ट. सेम अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में इन दिस हिंदुस्तान जिंक, इफ यू इन्वेस्ट देन यू विल गेट 11.12 डिवाइड बाय 100, दैट कम्स टू अराउंड 21. आई विल कंसिडर 21 1 and 2, 21 1 23 2,310 rupees, almost double. Okay, something around 2,400 rupees, almost double. You can consider almost double percentage amount आप लोग डिविडेंड में इनको मिल रहा है. And on that, on top of this, if you consider tax based on your slab, here also you have to give a tax of some percentage, so it will come at the same amount, almost same amount. So you can so ये आप देख रहे हो how much increase. अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं अपना अमाउंट, सेम अमाउंट 21,000, you will get 1,260. अगर इसमें रखते हैं you will get 23,010 rupees. Now it is the good time to invest. जब भी कोई कंपनी में डिविडेंड डिक्लेयर होती है, उनका प्राइस, उसका शेयर प्राइस बहुत इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज पीपल नो दैट दे विल गेट अ डिविडेंड. Good time to invest in those stocks which have a very good dividend is after their record date. Okay, once they declare the dividend, once they have the X date or the record date that is there maintained, वो जब expire हो जाए उसके बाद आप उन स्टॉक को खरीदे, so that next time you get a very good dividend. Because देखिए मैंने बोला था जब उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया दैट वाज अराउंड 324, अभी उनका प्राइस क्या है 306, तो कितना डिफरेंस हुआ 18 रुपीज का आपको ऑलरेडी मिल गया. यू आर गेटिंग डिविडेंड ऑफ 15.5, बट अभी आपको ऑलरेडी प्रॉफिट है 18 रुपीज में. सो व्हाई नॉट यूज दिस. तो ये आप कंसिडर कीजिए कि यू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 18 रुपीज बिफोर बाइंग ओनली, यू गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 18 रुपीज. ये प्राइस था जब नवंबर 24, राइट, व्हेन इट वाज द रिकॉर्ड डेट. उस डेट में इनका प्राइस था 324, नाउ इट इज 306. यू ऑलरेडी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18 रुपीज. अब ये अपना प्रॉफिट कंसिडर कीजिए, सोचने का तरीका बदलिए, एंड यू कैन सी लॉट ऑफ इनकम इन कमिंग फ्रॉम इक्विटी मार्केट. सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. भारत माता की जय.